Well, let's go across live now to the Nepalese Prime Minister Prachand's press conference, which is taking place in New Delhi in the Taj Palace. Say perspective, there be contribute to further consolidation of Nepal-India friendly bilateral relations. I have included media representative in my delegation in recognition of their vital role. I thank the distinguished media person both in Nepal and India for extensive coverage of this visit and for helping to generate an overall positive forward. Your contribution in generating positive momentum in Nepal-India relation is commendable. I came to this visit with a definite purpose and defined purpose. I choose to visit India just 1 month after assuming office of the Prime Minister of Nepal, and our decision was a concrete step in materialization of our policy statement that relations with neighbors is the top foreign policy priority. As neighborhood first is the policy priority of the government of India, we have seen a great opportunity to deepen our friendship and partnership in the context of this convergence of policy orientation. Success of neighborhood is measured not only by how much space you accord to neighborhood in your policy discourse and action, but also by the extent of your understanding, recognition and respect of the concern and sensitivities of the neighbors. Trust and understanding are the fundamental elements of any bilateral relation, particularly so among the immediate neighbors. This is the second time that I have become the Prime Minister of Nepal. In 2008, I was the first Prime Minister of the Republic of Nepal. I then had important responsibility to consolidate the republican system of governance, lead the process of writing the new constitution by the elected Constituent Assembly, and steer Nepal's historic peace process to a logical conclusion. As the elected leader of the country, I put my sincere efforts. I have now become the Prime Minister of Nepal at another crucial moment of history. After a prolonged and painful transition period of over a decade, we have been able to promulgate the Constitution made for the first time in Nepal history by the elected representative of the people. The Constitution has now provided a solid foundation for democratic, inclusive and justice-based polity for which Nepali people tirelessly fought for decades. It is now incumbent upon the government under my leadership to steer the process of implementation of the Constitution, and in the process my government is committed to take on the board all segments of Nepalese society. Nepal is a diverse society with a diverse perspectives. There are still some demands. We will accommodate legitimate demands within the framework provided by the Constitution. Constitution making marks the culmination of the historic peace process that started in 2006. Behind the success of the process was the determination, resilience and wisdom of the Nepali people, Nepal's political leadership, as well as support, solidarity and goodwill from our friends around the world. Goodwill and support from the people and government of India remain valuable and encouraging. As we embark onto the phase of implementation of the Constitution, there will be further consolidation of peace, stability and inclusive democracy in Nepal. Goodwill of our friends continues to remain important. Nepal's political course has taken a shape with the promulgation of the Constitution. The other facet of people's dream, the dream of economic prosperity, is still far from being realized. This aspect will now receive a logical focus in our domestic policy making as well as in orientation of our external relations. Yesterday, Prime Minister Modi ji and I
had extensive dialogue on how our two countries can deepen partnership for mutual benefits in different areas. We have already shared with you the thrust of the discussion and understanding through joint press briefing at Hyderabad House, as well as our joint statement issued yesterday evening. We have agreed to take concrete measures to ensure that the ongoing projects are completed in time-bound manner. We will do concrete and action-oriented review of the progress on a regular basis so that the key ongoing projects like cross-border railways, integrated checkposts, and postal road see tangible progress. We have agreed that hydropower should be the topmost area of our partnership, and for that an essential next step is the operationalization of the free market provision of Nepal-India Power Trade Agreement in domestic laws and regulations. We hope this will be realized soon. We will ensure that ongoing mega hydropower projects progress in timely manner. We have emphasized on early finalization of Pancheshwar DPR, and our official will hopefully conclude their homework soon for this. During my visit to Nathpa Jhakri hydropower project today, I saw how a single big hydropower project can have multiplier developmental impacts in national economy as well as lives of the people. Government of India has offered us generous support for post-earthquake reconstruction. We will expedite works for the utilization of the pledge fund. We hold the view that our security interests are interlinked. We will continue to scale up cooperation among our security agency to ensure our open border is not misused by wrong elements. We will continue to take measures to improve facilitative measures to enhance trade and transit. Together, we will seek how Nepal's import to India can be improved in order to address the growing trade deficit. We have natural expectation of support from India's public and private sector in Nepal's industrialization, and for this we want private sector of both countries to be better linked up. Tourism is yet another area where there is an ample possibility of collaboration between our two countries. Both our countries are rich in traditional knowledge, folklore and genetic resources. I will visit Patanjali Yogpith tomorrow to see how the ancient system of knowledge and practice can be translated into modern treasure of economy and way of life. My meeting with Home Minister Sri Rajnath Ji, Finance Minister Sri Arun Ji and Power Minister Sri Piyush Ji remain fruitful in shaping up the partnership in respective sectoral areas. Concrete homework will continue to be done in these areas by our respective officials. Private sector of the two countries are the indispensable player in materializing our vision of Nepal-India partnership for economic growth and development. During the business event yesterday evening, I invited the leaders of private sector in India to make Nepal their next destination for business. I shared our commitment to facilitate their investment in Nepal in every possible way we can. I had the privilege of meeting President Pranab Ji yesterday and convey him that we eagerly look forward to welcoming him in Kathmandu soon. I thank you for participating this event. Thank you very much. समुदाय पनि यतिखेर चासोको विषय के छ भने तपाईं र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा भएको कुरा यतिखेर सबैको चासोको विषय छ र तपाईंले
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संविधानमा स्वागत गर्नु पर्यो नेपालको संविधानलाई भनेर भन्नुभयो रे। उहाँले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन नभइकन कसरी गर्ने भनेर भन्नुभयो रे। साँच्चीकै यो नेपालको संविधानलाई भारतले कसरी हेरेको रहेछ र तपाईँले के पाउनुभयो? भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छ, वेलकम गरेको छ प्राइम मिनिस्टर प्रचण्ड? अब तपाईँले जो प्रश्न राख्नुभयो म अहिले धेरै लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न। प्रधानमन्त्री मोदीजी र मेरो बिचमा अहिले खुलेर दिलबाट कुराकानी भएको छ र विश्वासको धेरै राम्रो धरातल तयार भएको छ। जोइन्ट स्टेटमेन्टमा संविधानको बारेमा क्लियरली चिज आइ नै सकेको छ। यसलाई अनावश्यक रूपले ट्विस्ट गरेर कहीँ कसैले बुझ्न आवश्यक छैन। भाषा आफै क्लियर छ। भनिरहेछ जस्तो भारतलाई संविधानको स्वागत गराउनको लागि तपाईँ असफल हुनुभयो भन्ने एमालेको भनाइ छ। अर्को चाहिँ नेत्रविक्रम सन नेतृत्वको माओवादीले तपाईँले गरेको सम्झौताहरू गलत भएको भन्दै उसले आन्दोलन गर्नेसम्म धम्की दिएको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार कसले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा त त्यो उहाँहरूकै दृष्टिकोणको कुरा हो। आम रूपमा कुरा के हो भने यो भ्रमण सफल भएको छ। यसले दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई नयाँ धरातलमा उठाउनको लागि आधार तयार पारेको छ। यही कुरा मुख्य कुरा हो। अब अरूले के भनेका छन् मैले राम्रोसँग हेरेको पनि छैन। अहिले त्यसको बारेमा बढी टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जुन काम यहाँ थाँती राखेर आउनुभएको थियो संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू, अब यता गएपछि त्यो त्यही गतिमा अगाडि बढ्छ कि त्यसमा फेरि पुनरावलोकन हुन्छ? त्यो संशोधनको कुरा हाम्रो आन्तरिक विषय हो। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ देशभित्र। म गएपछि आउनुभन्दा अगाडि पनि छलफल चलिराखेको थियो, पछि पनि छलफल चल्छ। त्यो देशभित्रै टुङ्ग्याइन्छ। प्रधानमंत्री जी, मैं अखिलेश सुमन हूँ, राज्यसभा टीवी से, दिल्ली से। एक मधेसी का जो मामला था भारत और नेपाल के बीच में, बहुत लग रहा था कि विश्वास का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आपने भी ऐसे बयान दिए थे, बीच में लग रहा था कि भारत सरकार ने ही वो आंदोलन किया। ओली जी जब आए थे अपनी यात्रा पे, तो आने के बाद उन्होंने कहा था कि सारे मामले हल हो गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं लगा। तो आप जब इस बार यात्रा में आए हैं तो क्या लगता है कैसे वो सॉल्व करेंगे उस इशू को? पहली बात तो यह है कि मैंने कभी भी मधेश के आंदोलन को किसी दूसरे के साथ जोड़ के नहीं देखा था। ये बात गलत है कि मैंने भी वैसे ही करके देखा था, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो मधेश आंदोलन के भी लीडर के रूप में था। 30 दलीय आंदोलन जो था उसका कन्वेनर मैं ही था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी बीच में जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि ये नई सरकार बनने के बाद मधेसी मोर्चा के साथ, थारू के साथ, जनजाति के साथ एक सकारात्मक माहौल में सहमति और समझदारी बनाने के लिए वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कुछ ही समय के अंदर वो समस्या की समाधान होगा और फिर हम आगे जाएंगे। वहाँ के कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कैसे इस मामले को हल करेंगे? इसको हो जाने दीजिए। 2/3 मेजोरिटी नहीं है आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। 2/3 मेजोरिटी हो जाएगा, वैसे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आप देखते रहिएगा। प्रचंड जी, और क्या आपका चीन के साथ अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा? चीन का प्रेसिडेंट आने वाले थे, आप नेपाल में अभी शायद नहीं आ रहे, कि आपको लगता है कि कुछ विवाद पैदा हुआ है आपके और चीन के बीच? नहीं। और चीन के साथ संबंध किस तरह से देखते हैं? चीन के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है कि चीन से हाई लेवल की विजिट की बात अभी भी चल रही है, पहले कभी भी डिसीजन नहीं हुआ था। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही उसका कोई डिसीजन होगा। हम उसके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि आपने कहा कोई विवाद है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सर, दिस इज़ कॉलोल भट्टाचार्य फ्रॉम द हिंदू। सर, ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कल कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, वो द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द नेपाली पीपल, पर मधेसी लीडर्स ने आज हमें कहा कि वो तो मधेसी नेता जो हैं उन्होंने उसको रिकग्नाइज नहीं किया है। तो ये नेपाली लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? इसके लिए तो उनके साथ तो बातचीत चल ही रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने तो इनिशिएट ही नहीं की बातचीत आने से पहले। नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। आने से पहले, एक दिन पहले भी हमारी फॉर्मल मीटिंग हुई थी और बहुत अच्छी वातावरण में बातचीत हो रही है।
मुझे विश्वास है कि कुछ दिन के अंदर ये समस्या की सकारात्मक समाधान होगी और समाधान के बाद सबके लिए ये संविधान हिस्टोरिकल अचीवमेंट बन के जाएगा। कोई टाइमलाइन देंगे आप कि कितने दिनों में करेंगे आप? ऐसे टाइम दिन वो करना तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे आशा है कि जल्द ही ये समस्या की समाधान हो जाएगा। प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा भारतको सपोर्ट र गुडविलको कुरा गर्नुभयो। कन्स्टिट्युसन इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ इन्डियाबाट तपाईँले कस्तो सहयोगको एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो? अब हिजोको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा त्यो कुरा क्लियर छ। इम्प्लिमेन्टेसनको लागि सरकारले, नेपाल सरकारले जे पहल गरेको छ त्यसमा सहयोग गर्ने भारत सरकारले भन्ने कुरा बडो प्रष्टसँग आइ नै सकेको छ। त्यसकारण यसमा अरू बढी चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। पिस प्रोसेसमा भारतको गुडविल, सपोर्ट, कोअपरेसन सुरुदेखि नै थियो, अहिले पनि छ र त्यो रहिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ। म पुरै सन्तुष्ट र उत्साहित रूपमा नै म फर्किँदैछु। अब लास्ट गरौँ है, लास्ट। You just had a meeting with the Home Minister, Mr. Rajnath Singh. Did you all discuss about India's security concerns? Because India has been raising its security concerns for a very long time since you were you were Prime Minister for the first time. So were there specific issues on security aspects discussed? And second thing, I just want to just add on to the question. It seems that your government is following a balanced relationship between the two neighbors. How are you going to balance the relationship? Yeah, I have already taken some initiative. You know it very well. When I sent special envoy here in India and other deputy prime minister there in China, it is the initiative to create the balanced relation with both of our neighbors. Now I am here in India. You know it very well. Today I have a very fruitful meeting with Home Minister Rajnath Singh ji. Always when I met with him, openly and very in a cordial atmosphere, we have a very good and fruitful meeting, and we also discuss on the issue of the security concern of both the countries, and we committed to move forward collectively. Thank you. Thank you very much. भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अभी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। 4 दिन की यात्रा पर भारत में है प्रचंड। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जितने भी पुराने मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो उनकी बातचीत हुई है वो बहुत लाभदायक बातचीत हुई है। प्रचंड ने इसके अलावा बोला कि जिन मुद्दों पर भी थोड़ा से गंभीर विवाद थे उनको सुलझा लिया जाएगा और उन्होंने बोला कि संविधान सभा में भारत की तरफ से जो सुझाव मिले हैं संविधान बनाने को लेकर उस पर भी विचार किया जाएगा। प्रचंड ने नेपाल में भारत के निवेश की बात भी कही है। उन्होंने भारत के साथ नेपाल के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात भी कही है। तो अभी आप नई दिल्ली से नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की प्रेस वार्ता को देख रहे थे।